to my channel, The Brown Unicorns. I hope you all are doing really well and fine. But before getting into the video, I just want to show you a quick DIY so that you will look instantly much prettier and beautiful without any efforts. You want to know how? Yes, I was talking about this really beautiful and awesome smile. Now with this smile, let's quickly get into the video where I'll be telling you today कि मास्क यूज करने के फायदे क्या क्या होने वाले, उसको क्यों यूज करने चाहिए, किस प्रिकॉशंस के साथ यूज करने चाहिए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू द डेमो ऑफ यूजिंग इट इन द एंड ऑफ द वीडियो. सो स्टे ट्यून एंड वॉच इट टिल द एंड ताकि आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाए, लिटरली एवरीथिंग. आई डोंट थिंक कि इसको यूज करने के बाद आपको दोबारा कहीं वीडियो पे जाके इसको सर्च करना पड़ेगा. सो विद दैट थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज व्हाई टू इन्वेस्ट योर मनी इन दिस थिंग. वैकेशंस जाते हैं ना आप लोग, वैकेशंस पे क्यों जाते हैं? अपनी बॉडी, सोल, माइंड के रिफ्रेशमेंट के लिए, अपने इंटायर सिस्टम को अंदर से रिजुविनेटिंग करने के लिए, हैप्पी पीस की सर्च पे आप जाते हैं वैकेशंस पे या फिर फैमिली टाइम पे. बिल्कुल उसी तरह आपकी फेशियल स्किन टिश्यू को भी वैकेशंस की जरूरत होती है. चाहे क्यों ना आप रोज सीटीएम रूटीन करते हो, तब भी आपके स्किन को आप उतने अमाउंट पे हाइड्रेशन, नरिशमेंट, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हो. एंड दैट्स व्हाई इट केम फॉर रेस्क्यू कि आप जो है मास्क यूज करके आपके स्किन को उतना ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सकते हो जितनी ये नीड करती है. टॉकिंग अबाउट दैट इन अ रियली वैलिडेट एंड रीजनेबल वे, अगर आप मास्क सीरम यूज कर चुके हैं पहले, देन यू वुड प्रोबेबली नो कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नरिशमेंट मिलता है. बट सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और सीरम. अगर आप सिरप यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि ये कितनी जल्दी आपके स्किन से इवापोरेशन हो जाती है, क्योंकि दिस हैज दिस नेचुरल टेंडेंसी ऑफ इवापोरेशन जो कि आपके स्किन पे ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाती. बट मास्क सीरम यूज करने का फायदा ये है कि आपके स्किन पे एक बैरियर और एक लेयर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से जो भी सीरम है इसके अंदर वो जल्दी से बाहर नहीं जा पाते और ये उसके टाइम को लॉन्गिट्यूड यानी कि बढ़ा देती है आपके स्किन पे. तो इसकी वजह से आपको उसका जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है. दैट्स व्हाई इट सेज दैट आपको एक मास्क सीरम में 7 दिन में आप जितना भी हाइड्रेशन या फिर नरिशमेंट एक सीरम से पा पाते उतना आपको मिल जाता है. आई होप यू आर गेटिंग द कैलकुलेशन राइट नाउ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको इसको लगाने से बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं. देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स लाइक एंटी एक्ने, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग, टाइटनिंग एंड अ लॉट मोर. बट एक फेस मास्क सीरम से आपको ये सब कुछ नहीं मिल सकता. फॉर डिफरेंट स्किन इश्यूज यू हैव टू यूज डिफरेंट स्किन मास्क सीरम. सो एंटी एक्ने, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? समथिंग दैट इज एंटी इन्फ्लामेटोरी, एंटी फंगल एंड समथिंग दैट डजंट लेट योर एक्सेस ऑयल गेट आउट ऑफ योर स्किन, राइट? तो उसके लिए आप मड मास्क, एक्टिव चारकोल, ग्रीन टी, ये सारी चीजें ट्राई कर सकती है. इन द अदर हैंड फॉर ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग यू कैन यूज lemon, orange, vitamin C serum and a lot more for that matter. Again, for calming to refreshing and soothing, you can go for aloe vera gel, lavender essential oil and a lot more. So for different skin issues you can actually go for different skin set serum mask. Now let me bust a myth for you. There are a lot of people who believe कि अगर हमने एक दिन जो है सिटमा सीरम यूज कर लिया तो अगले 7 दिन तक हम अपने सीटीएम स्किप कर सकते हैं या फिर सीरम स्किप कर सकते हैं. नो, दैट्स ए बिग नो. व्हाई? सी अ वेरी गुड एग्जांपल. पार्टीज वगैरह में जाते हैं ना आप लोग, फिर वहाँ पे इतने सारे पकवान बने होते हैं, समोसे, जलेबी, यू नो, मेन कोर्स, स्टार्टर, और ये वो सब कुछ, और सब आप खा लेते हो. तो फिर अगले 7 दिन क्या आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर स्किप कर लेते हो? नो, राइट? सीटीएम इज लाइक ए फूड फॉर यू. आपके स्किन को आप स्टार्व नहीं करवा सकते अगले 7 दिन तक जस्ट बिकॉज आपने एक दिन में उसे इतनी ज्यादा नॉरिशमेंट या फिर मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर ली. सो यू हैव टू बी वेरी रेगुलर एंड पर्टिकुलर विथ योर सीटीएम रूटीन एंड नेवर स्किप योर सीरम्स एट ऑल. नाउ लेट्स मूव ऑन कि आपको इसको कितनी दफा यूज करनी चाहिए और कितने टाइम तक अपने स्किन पे रखना चाहिए. नाउ देयर इज नो सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन अबाउट दिस थिंग कि आपको इसको कितनी दफा यूज करना चाहिए. आप चाहे तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, महीने में 2 बार या फिर रोज भी यूज कर सकती है. बट इफ यू विल आस्क मी देन आई विल प्रोबेबली टेल यू कि आप इसको हफ्ते में एक बार यूज करें. दैट वुड बी प्रोबेबली मोर देन इनफ फॉर योर स्किन. बट अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली एंड ब्रेकआउट्स करती है देन डोंट यूज इट डेली एट ऑल.
बिकॉज दिस हैज दिस नेचुरल टेंडेंसी ऑफ क्लॉगिंग योर पोर्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रेशन ऑयल होता है, तो आपका पोर्स जो है क्लॉग हो सकती है और आपको ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो सकती है. सो नेवर यूज इट रेगुलरली. बट आप अगर ड्राई स्किन वाले हैं देन यू कैन प्रॉब्ली यूज इट डेली, बट आई विल स्टिल सजेस्ट यू टू गो फॉर वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ मंथ. नाउ लेट्स मूव ऑन कि इसको कितने टाइम तक अपने स्किन पे रखना चाहिए. नाउ दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ पीपल डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक. टैग को पढ़े, उसके पीछे उसको मेंशन किया होगा कि कितने टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हैं अपने स्किन पर. दैट विल प्रोबेबली रेंज बिटवीन 15 to 25 मिनट्स. 15 से 25 मिनट तक उसका रेंज होता है. एंड नेवर एक्सीड दैट रेंज. नेवर, आई रिपीट नेवर, बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है दैट हैज दिस रिवर्स इफेक्ट. अगर आप उसको उससे ज़्यादा रखते हो तो आपके स्किन से जो नेचुरल हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन होता है वो उसे भी खींच लेता है. एंड यू विल नेवर वांट दैट फॉर योर स्किन, राइट. सो इट्स बेटर कि आप जो है इसको सिर्फ 15 या 25 मिनट तक अपने स्किन पे रखें और लालच में आपको इसको ज़्यादा देर तक ना रखें, बिकॉज दैट विल प्रोबेबली गिव यू a lot of bad than any good, right. Now a lot of YouTuber has this video of like आप इसको कैसे दो दो दिन यूज कर सकते हो, कैसे आप इसको 3 बार यूज कर सकते हो. लाइक ब्रो, लाइक वेक अप, यू कैन डू दैट. इवन अगर आपको पता है कि आप अपने मेकअप ब्रश को हर बार धो के सुखा के नहीं रखते हो, देन दे माइट बिल्ड अप सम जॉम्स और जो कि आपको एक्ने वगैरह ये सारी इश्यूज दे सकती है. सो नेवर डू दैट. नेवर गो फॉर एनीथिंग ब्लाइंडली. डू योर ओन रिसर्च before following any YouTuber or influencer. Do your own research, Google it, watch a lot of video. Not everyone is saying that, right? So do your research and then only like follow some influencer or YouTuber. Now moving on, आपको मैं 2 प्रो टिप देने वाली हूँ. जो पहला होगा वो ये होगा कि अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा सनबर्न हो गई, रैसेस हो गई, एलर्जीज हो रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रेडनेस आ गई है, सनबर्न हो गई है, देन refrigerate it before 30 minutes and let it completely chill. I said refrigerate but don't freeze. ठंडा करना है, जमाना नहीं है. उसके बाद आप इसको अपने चेहरे पे लगाने, देन you will probably get rid of your redness, your itchiness and also आपके आंखों के नीचे अगर puffiness है then that can also get out from your skin. Now the next pro tip would be, अगर आप कहीं शादी या पार्टी वगैरह में जा रही हैं, अभी तो नहीं जा रही होंगी बट अगर जा रही हैं और आपका स्किन बहुत ज़्यादा डल और मुरझाया हुआ दिख रही है, देन before 1 hour you can use it for instant glow and brightness effect. and also आपके मेकअप जो है इतने मक्खन की तरह ग्लाइड करते हैं आपके स्किन पे, that I can tell you guys. So these are the pro tip of using it. Now moving on, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसको कैसे पर्टिकुलर तरीके से यूज करना चाहिए, because there is a way to use it properly. So the first thing that you'll need is to remove your makeup completely. I said completely means so guys, after washing my face completely with a mild cleanser, now I'm quickly going to tone my face in order to let the beauty and goodness of this product absorb into deeper layer of your skin. You must tone your skin. So for that I'm using this iron skin toner. I hope you all can see it. Yeah. Okay, so I'm quickly going to splash it all over my face. So and let it dry completely. Make sure that you let it dry completely. So when it's got dried, now I am going to apply my lip balm in order to give it proper hydration. You don't need to skip any part of your body. So I'm just going to quickly apply. Okay. Now when it got dried, now let me quickly show you the sheet mask serum that I'm probably going to use today. So these are the sheet mask serum that I was talking about. These are from Nykaa. I got like each of them for ₹50. Yeah, that's magic, right? That's very good. So they always get this buy one get one offer. I'll give the link in the description box. You can try it out there. So today I'm just going to use this strawberry and argan oil blemish free glowing skin. So before doing that you have to do this, massage this, so that जितना भी oil और serum इसके नीचे बैठ गया होगा वो ऊपर आ जाए और आपको पूरा benefits मिल सके. So you have to massage it really well and after that you are going to tear it.
So I'm just quickly going to tear it out for you guys. Okay, now I hope you all can see. So this is what the face mask serum looks from inside. Now I'm quickly going to open it. It's very gentle, so make sure you are using it in a proper manner. Alright, otherwise you will end. I have completely opened it for you guys, and this is how it looks. So you have to adjust it properly onto your skin. Don't miss out any place and apply it. So guys, now after applying it completely, you need to take rest for the next 15 minutes, and by rest I mean rest. Relax completely and set a timer for 15 minutes because you don't want to exceed the time limit. So set it for 15 minutes and I'll see you after 15 minutes. Yeah. So guys, it's been 15 minutes that I've applied this mask. Now I'm quickly going to remove it and wipe it out of my skin. So are you ready for the magic? Okay, so I'm just going to give you a little bit closer to see the brightness and glowing and goodness of my skin that's still there. So with all the residue, you don't have to wash it, you have to just pat it and completely let it absorb. Don't overgo, don't massage it like this, just only pat it and let it absorb completely onto your skin. Will take, okay guys, this is in 5 to 6 minutes and I have completely let it absorb into my skin. Now this is the time to lock all the moisture inside. So in order to do that, you need to apply a thick layer of moisturizer onto your skin. So I love to use this Plum Renewed Clarity Night Gel and I got it for free. You want to know how? I'll give the description. I'll give the link in the I button so you can check it out there. So I'm just quickly going to take a damp of this thing and apply it all over my face. So this is how the consistency of the cream looks like, and I'm just quickly going to apply it all over my face. So guys, that's it about today's video. Now I have told you everything about this particular sheet mask serum, how to use it, when to use, and why you should use it. So that's it. Now I'll see you in my next video. If you have liked this video, make sure you give it a huge thumbs up and also don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon ताकि अगली बार मेरी वीडियो आप तक आपका प्यार मुझ तक सबसे पहले पहुंच सके. Also let me know in the comment section how this video was informative enough for you or not. Also tell me कि आपको अगली बार क्या देखना है और क्या जानना है मुझसे. And yeah, share this video to your family, friends, relatives and let them know the benefits of sheet mask serum and they should also use it. तब तक मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में. टाटा बाय बाय, सी यू एंड सबा खेल. लव यू ऑल.